Good evening, dear students. First of all, I welcome you all in this present lecture. Myself, Dr. Shalini Nema, Assistant Professor, Government Dr. Shama Prasad Mukherjee, Science and Commerce College, Bhopal. Today, we are going to discuss upon waste, classification and treatment technology. So, let's start. Okay, now, let us first discuss what is waste. Waste is actually any unwanted या unusable material, a substance which is of no use. एनी सब्सटेंस जिसको हमने प्राइमरी यूज के बाद फेंक दिया हो, डस्टबिन में डाल दिया, चाहे वो मूंगफली का छिलका हो, पेपर हो, प्लास्टिक हो, एनीथिंग, दैट ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वेस्ट. Now we classify these waste into three different types: biodegradable, non-biodegradable, and infectious waste. Biodegradable waste is that waste which contain the organic matter which is easily decomposed by microorganisms, bacteria, fungi, yeah, decomposers you can say. Right? Now these includes our food, vegetables, fruits, etc., or paper, etc. Right? Now, since this type of waste they are easily degraded by microorganisms, they do not remain persist in the environment, and therefore they get converted into the carbon dioxide, water and compost, making these waste into you can say into environmental friendly products. Right? Next is our non-biodegradable waste. Non-biodegradable waste वो waste होता है which is not easily degraded by microorganisms, therefore they remain persist in the environment. Since they remain persist in the environment for a longer period, they causes long-term pollution and negative impact to the environment and health also. Therefore, it is essential that such type of waste should be treated and disposed properly. The examples you can understand: plastics, metals, etc. The next is the infectious waste. Infectious waste वो waste होता है जिसमें pathogens होते हैं sufficient quantity में, which are able to cause diseases in animals also, in human beings also. So these waste, we can take the examples like the waste which contains the body fluids like syringes or swabs or bandages or any bacterial culture which we collect from the hospitals, nursing home, etc. So this is very much essential that such type of waste should be treated, handled and disposed properly in order to create a safe environment. Okay, now again we divide these different categories into solid, liquid and gaseous waste. Solid waste is that non-liquid discarded material that is of no longer use and thrown out. The liquid waste is that wastewater which is generated from the industrial or the commercial or the domestic activities. Further, gaseous waste वो unwanted harmful gases हैं which are released into the atmosphere as a byproduct of industrial processes, as a byproduct of combustion, or you can say chemical reactions, or you can say by transportation. So these are the example of different type of waste. Solid waste includes the our municipal waste, any industrial waste, agriculture waste या e-waste like batteries हो गया, आपके कोई भी चार्जेस वगैरह जो आप फेंक देते हैं वो सब हमारे solid waste की कैटेगरी में आ जाते हैं या e-waste की कैटेगरी में आ जाते हैं. E-waste, solid waste, right? Then comes our liquid waste, कोई भी polluted water which comes out from the nadi, nala, or toxic liquid from industry, sewage water, kitchen waste, kitchen liquid waste आप कह सकते हैं. These are all our liquid waste. Similarly, gaseous waste जैसा आप देख रहे हैं, any polluted gases which are going into the atmospheres from the chimneys or factories, these are all gaseous waste. आगे हम इन सभी प्रकार के वेस्ट को ट्रीट करते हैं ताकि हम उनका मैनेजमेंट कर सकें और एक ग्रीन एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकें. सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड वेस्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है. सॉलिड वेस्ट
उस सबसे पहले सोर्स पे ही सेग्रीगेट किया जाता है इनटू बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल एंड हैजार्डस वेस्ट। जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, उसको कंपोस्टिंग या एनारोबिक डाइजेशन के माध्यम से ट्रीट किया जाता है और उसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाया जाता है। जो हमारा रिसाइक्लेबल वेस्ट होता है, जैसे कि हमारा प्लास्टिक्स या पेपर्स, इनको हम फर्दर प्रोसेस करते हैं ताकि हम उनको रीयूज कर सके। इनिसरेशन में हम हैजार्डस वेस्ट को हाई टेम्परेचर पे सब्जेक्ट करते हैं ताकि उसके वॉल्यूम को रिड्यूस कर सके और एनर्जी जनरेट कर सकते। फाइनली जो हमारा रेसिडुअल वेस्ट बचता है या वो वेस्ट जिसे हम नॉन रिकवरेबल वेस्ट बोलते हैं, उसको हम सैनिटरी लैंडफिल्स में डिस्पोज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट की। लिक्विड वेस्ट एक्चुअली दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कंटामिनेंट्स फ्रॉम वेस्ट वाटर in order before releasing, you can say, into the environment. Now this includes the various steps like preliminary treatment, primary treatment, secondary treatment and tertiary treatment. Preliminary treatment में हम लास्ट सॉलिड्स जैसे कि प्लास्टिक्स या ग्रेट को रिमूव करते हैं। Then comes the primary treatment जहाँ पे हम सस्पेंडेड सॉलिड्स को सेडिमेंटेशन टैंक्स में सेटल डाउन करते हैं। फिर आता है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट जहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हमारे ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं। एंड देन अवर टर्शियरी ट्रीटमेंट जहाँ पे हम एडवांस प्यूरिफिकेशन मेथड्स एंड टेक्निक्स को अपनाते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन और यूवी ट्रीटमेंट टेक्निक्स इन ऑर्डर टू रिमूव द न्यूट्रिएंट्स, पैथोजेंस एंड केमिकल। Okay, now let's discuss the gaseous waste treatment, and this is the process. You can say it's a process of removing or neutralizing the harmful gases. So this method includes, yeah, you can say the process includes various methods like scrubbers जहाँ पे हम liquids का इस्तेमाल करते हैं gases को neutralize करने के लिए या absorb करने के लिए. Then comes our electrostatic precipitators जहाँ पे हम fine dust particles को remove करते हैं using electric charges. Then comes our cyclone separators. Cyclone separators में हम centrifugal forces का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम large dust particles को separate कर सके. Then comes our activated carbon filters जहाँ पे हम volatile organic compounds को trap कर लेते हैं. And then comes our catalytic converters जहाँ पे हम harmful gases को less toxic forms में convert करते हैं. So dear students, जैसे कि आप समझ सकते हैं, as you all understand that because of increasing population and urbanization, this waste generation is a global concern today, and therefore ये जरूरी है कि आज के सिनेरियो में we should develop scientific strategies that not only limit our waste generation but even able to manage this waste efficiently so that we can recover and reuse valuable resources from them. And by doing so, we can convert these waste into wealth, and even we can conserve our natural resources and move towards a sustainable future ahead. So I hope and I wish that we should all take a promise or oath that we are going to say no to plastics and try to limit our waste so that we can create a clean, green and safe environment. Thank you all for listening me patiently.